ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द एनीमिया. ठीक है, आवाज़ मेरी क्लियर है आप लोगों को? यस मैम. ओके, नाउ देखिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एज फार एज द डेफिनेशन इज कंसर्न्ड we studied that basically anemia is a qualitative and quantitative reduction of the hemoglobin. So basically it's hemoglobin content reduction, either it can be qualitative or it can be quantitative. So as far as qualitative defect is concerned, we discussed it's actually iron deficiency anemia. Because it's actually the quantity of iron that is less. So quantitative में हमारे पास iron deficiency anemia is there, but as far as the qualitative defect is concerned, जिसमें कि quality उसकी hemoglobin की affect हो रही है, and how it is affected, all of you know कि basically hemoglobin is comprised of two parts, one is heme and other is globin. So definitely either heme is defective or globin chains are defective. तो you must also know कि how this hemoglobin formation is there. तो इसमें ultimately as far as the heme part is concerned, यहाँ पे आपको जाहिर है आयरन कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. जहाँ तक ग्लोबिन की बात है तो ग्लोबिन चेन्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड ऑल ऑफ यू नो कि ग्लोबिन चेन कौन कौन सी है, कौन सी ग्लोबिन चेन्स है? मैडम अल्फा एंड बीटा चेन्स. यस, बेसिकली दीज आर द अल्फा एंड बीटा चेन्स. तब यहाँ पे जब अल्फा या बीटा चेन्स में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो दैट इन टर्न मीन्स देर इज सम क्वालिटेटिव डिफेक्ट, दैट इन टर्न इज कॉजिंग द रिडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन कंटेंट. तो इन दिस वे दैट जिसमें कि अल्फा या बीटा डिफेक्ट हो रहा है चेन्स का, तो दैट इज अल्टीमेटली लीडिंग टूवर्ड्स द थैलेसीमिया. तो प्रीवियसली हमने एनीमिया इन प्रेगनेंसी को डिस्कस किया इन डिटेल कि जिसमें कि हमने बताया कि अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल और अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान, द एनीमिया इज डिफाइंड एज एक्चुअली द हीमोग्लोबिन कंटेंट इफ इट इज़ लेस देन 11 grams per deciliters in the first and third trimester or less than 10.5 grams per deciliters in the second trimester. So you have to very strictly follow these values. और टोटल जो प्रेगनेंसी में आयरन रिक्वायरमेंट है, हाउ मच इज दिस? एक्चुअली जो हमारे पास जो एग्जैक्ट अमाउंट है दैट इज एक्चुअली जी जो टोटल प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? दैट इज़ एक्चुअली 1000 मिलीग्राम्स. ठीक है, जिसमें हम उसके जो रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है बेसिकली ना सिर्फ ये कि वो आपके पास फिटस में जो आपको ब्लड सिंथेसिस के लिए चाहिए, प्लेसेंटल टिश्यू के लिहाज से आपको चाहिए, पेशेंट हरसेल्फ की जो तमाम उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसको फुलफ़िल करने के लिए एक्स्ट्रा जो उसको है वो 1000 मिलीग्राम्स उसको प्रेगनेंसी में शी इज़ इन नीड. ठीक है, अब इसमें फर्दर मज़ीद एनीमिया के हमने जो डिस्कस किया थोड़ा सा आगे जाकर कि इन्वेस्टिगेशंस कौन सी इंपॉर्टेंट हैं. कुछ हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट है, कुछ हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट है. अब जहाँ तक हमने स्क्रीनिंग टेस्ट की बात की थी दैट वाज एक्चुअली द कंप्लीट ब्लड पिक्चर, जिसमें आप हीमोग्लोबिन वैल्यू को देखते हैं, आप साथ में अदर काउंट्स को भी देख लेते हैं, प्लस आप प्लेटलेट्स भी देख लेते हैं, कोएगुलेशन या क्लॉटिंग डिफेक्ट को रूल आउट करने के लिए. साथ में आपने रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ RDW को देख लिया, अगर मोर देन 13 है तो ये बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को थोड़ा इंडिकेट करता है. तो व्हाट इज़ रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ? ऑल ऑफ यू मस्ट नोट के देखें, जब RBCs अगर स्कैटर्ड होंगे एनीमिया की वजह से ऑलरेडी हीम कंटेंट कम है, तो इनमें डिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा मैम. ज़्यादा हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इस अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स कि RDW इज़ इंक्रीज इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. तो ये आपने थोड़ा सा हम बेसिकली कंप्लीट ब्लड पिक्चर पे देखते हैं. इसके अलावा हमारे पास जो अदर देन दैट स्क्रीनिंग टेस्ट आता है दैट इज़ एक्चुअली द रेड ब्लड सेल इंडेसिस, जिसमें हम मीन का पर किलो वॉल्यूम, मीन का पर किलो हीमोग्लोबिन और मीन का पर किलो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं, और साथ में हम लोग पेरिफेरल ब्लड पिक्चर को देखते हैं. अब पेरिफेरल ब्लड पिक्चर जो है
वो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया की पिक्चर देगी, साथ में एबनॉर्मल साइज शेप ऑफ सेल्स हो रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं पोइक्लोसाइटोसिस या फिर एनाइसोसाइटोसिस। और रेटिक्स आपको नजर आएंगे। व्हाट डू द रेटिक्स शो? कैन एनीवन टेल मी कि रेटिक्स क्या शो करते हैं? Yes, what do the retics indicate? Immature RBCs condition. Yes, these are actually the immature RBCs जो कि बोन मैरो में से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर बोन मैरो फॉर एग्जांपल कंपेंसेटरी फेज में है, बोन मैरो RBCs को रिप्लेसमेंट की तरफ जा रही है, तो व्हाट विल हैपन? रेटिक्स काउंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी ना? इंक्रीज होगी। यस, इंक्रीज होगी बिकॉज टर्न ओवर बढ़ गया ना एकदम से। बोन मैरो इज ट्राइंग टू कंपनसेट दिस डेफिशिएंसी और अल्टीमेटली बोन मैरो इज नाउ इन कंपनसेटरी फेज। तो अल्टीमेटली रेटिक्स काउंट जो कि नॉर्मली अप टू 2.5% तक होती है, तो इन दिस केस रेटिक्स जो है वो ज़्यादा काउंट बढ़ जाएगी। तो सर्कुलेशन में, पेरिफेरल सर्कुलेशन में रेटिक्स यानी कि इमेच्योर सेल्स भी आना शुरू हो जाएंगे बिकॉज बोन मैरो इज इन द कंपनसेटरी फेज। ठीक है, तो ये भी हम देख रहे होते हैं साथ में। Now, as far as the diagnostic test is concerned, तो that is ferritin। हम सीरम फेरेटिन की वैल्यू को बेसिकली हम लोग उसको इस तरीके से करते हैं कि नॉर्मल वैल्यू इज़ 15 to 300 माइक्रोग्राम्स। अगर इससे कम है तो इट मीन्स कि ये आयरन डेफिशिएंसी है, और अगर ज़्यादा की तरफ जा रहा है तो फिर हम इसको किस तरफ ले लेंगे? कोई और डिजीज़ है जो कि बेसिकली क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, जिसमें कि फेरेटिन बढ़ रहा है लेकिन हीमोग्लोबिन कम है पेशेंट का। ठीक है, तो व्हाट इज़ दैट क्वालिटेटिव डिफेक्ट? किस में ज़्यादा होगा आपका फेरेटिन? फेरेटिन किस में ज़्यादा हो जाएगा? मैम कैन यू रिपीट क्वेश्चन? अगर आपका फॉर एग्जांपल एक पेशेंट के अंदर जो आपका फेरेटिन कंटेंट है दैट इज़ इंक्रीज्ड, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? ईदर इट इज़ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट और इट इज़ क्वालिटेटिव डिफेक्ट। It is qualitative defect. Yes. It may be due to thalassemia. yes it is actually the qualitative defect, जिसमें कि बेसिकली जो ग्लोबिन पार्ट है, ग्लोबिन चेन्स हैं, दे आर नॉट बीइंग सिंथेसाइज्ड प्रॉपर्ली। ठीक है, हीम कंटेंट तो मौजूद है, ब्लड ग्लोबिन कंटेंट में कहीं इम्प्रॉपर सिंथेसिस हो रही है। तो नॉर्मली हाउ मेनी जीन्स रेगुलेट दिस बीटा थैलेसीमिया? बीटा जो हमारे पास चेन्स हैं उसको कितनी जीन्स रेगुलेट करती हैं? बीटा में कितनी जीन्स होती हैं और अल्फा में कितनी जीन्स होती हैं? अल्फा में 4 होती हैं, बीटा में 2 होती हैं। ठीक है, क्लियर? हेलो Beta is having 2 chains. जी, बीटा में 2 चेन्स होती हैं और अल्फा में कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि अगर बीटा थैलेसीमिया है तो आपने देखना है कि थैलेसीमिया माइनर है या मेजर है। अगर मेजर माइनर है तो कितनी जीन डिफेक्ट होगा? सिंगल जीन डिफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मेजर है तो कितना जीन डिफेक्ट होगा? 2 जीन डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हाँ बोथ हो जाएगा ना। सिमिलरली अगर हम अल्फा थैलेसीमिया की बात करते हैं तो उसमें हमने देखना है कि अल्फा चेन्स में से कितनी चेन्स इफेक्ट, 4 में से कितनी चेन जो आपकी जीन्स हैं वो इफेक्ट हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, नाउ हाउ इज़, अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और उसमें यू कम अक्रॉस हीमोग्लोबिन एंड दैट इज़ डिक्रीज्ड, and then definitely your next step is to go for the diagnostic test that why is her hemoglobin level less। तो आप उसमें ऑल्दो स्क्रीनिंग करते हैं बट लेटर ऑन यू गो फॉर द डायग्नोस्टिक टेस्ट। आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट किया तो दैट रिवील्ड कि पेशेंट का जो फेरेटिन है दैट इज़ मोर देन नॉर्मल, लाइक वो फॉर एग्जांपल 300 से भी अबव चला गया है। तो नेक्स्ट व्हाट विल यू डू? विच टेस्ट विल यू गो टू कंफर्म दिस डायग्नोसिस? Can anyone tell me? जी, Electrophoresis मैम? yes, it is the hemoglobin electrophoresis। Electrophoresis तो थैलेसीमिया के लिए। हाँ जी, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे बेसिकली। वाई? बिकॉज जो हमारे पास हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो ये इंडिकेट कर रहा होता है, नॉर्मल जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की पिक्चर होती है
वो ये शो करती है कि एडल्ट हीमोग्लोबिन वैल्यू इज़ मोर देन 90 और 95%। आपकी जो अदर देन दैट जो इमेच्योर फॉर्म्स होती हैं हीमोग्लोबिन की, दे आर वेरी मच नेग्लिजिबल, लाइक 2 to 3% होंगी हार्डली। बट व्हाट विल हैपन कि अगर पेशेंट को थैलेसीमिया है तो एडल्ट हीमोग्लोबिन का वैल्यू जो है, एडल्ट हीमोग्लोबिन की वैल्यू कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, लेकिन फीटल हीमोग्लोबिन और A2 हीमोग्लोबिन की वैल्यू कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। वाई? बिकॉज आपकी जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है दैट इज़ नॉट बीइंग फॉर्म्ड अप टू द ऑप्टिमल वैल्यू। सो टू कंपेंसेट दिस, the immature form of hemoglobin, that is either it is HbA2 or it is fetal hemoglobin, their level is raised in hemoglobin electrophoresis. So this in turn gives you a picture that there is defective hemoglobin formation because of some beta or alpha chain defect. So ultimately you can come across the diagnosis of thalassemia, or thalassemia में definitely you have to see either it is thalassemia major or it is thalassemia minor. And furthermore thalassemia में definitely all of you know कि thalassemia major जो है it is incompatible with life. वाई? बिकॉज इमेच्योर RBCs हैं, हेमोलिसिस हो जाएगा, हेमोलिसिस हो जाने की वजह से कॉन्टीन्यूसली लिवर पे बर्डन पड़ेगा, प्लस ये कि जो RBCs हैं उनकी कॉन्टीन्यूसली हेमोलिसिस की वजह से स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, प्लस कार्डियक जो फंक्शन है वो इफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव हेमोलिसिस, अल्टीमेटली कैन गो इन फेलियर। और इसमें चूँकि आयरन की एक्सेसिव डिपोजिशन हो रही है, लिवर में हो रही है, डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ में हो रही है, तो इट प्रेजेंट्स एज आयरन स्टोरेज डिजीज़, और साथ में पेशेंट को हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, और फिर अल्टीमेटली दे अंडरगो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स, and also because of this iron overload they have to go chelation therapy. So ultimately all this results basically this is incompatible with the life, so long term treatment is being required. अब for example thalassemia आपने confirm कर लिया कि patient is having thalassemia, either it, then now you have to see कि it's major or minor. तो अगर for example minor thalassemia है तो माँ को अगर माइनर थैलेसीमिया है और फादर का आपने फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस कंफर्म कराना है, फादर का नॉर्मल आया, तो व्हाट विल बी द चांसेस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न इन द ऑफस्प्रिंग? Ma'am, 50% carrier, 50% normal. Yes, 50% will be carriers and 50% will be normal. And if both mother and father they are carriers according to the electrophoresis report, then how will it be interpreted? Ma'am, 25% carrier, 25% diseased, and 50% normal. Yes, 25% will be carrier, 25% will be diseased, 25% will be normal and 50% will be carrier. तो अब ये आपको now if this patient who is having thalassemia minor trait and her husband is also having thalassemia minor in confirmed on electrophoresis, now keeping in mind that in every pregnancy the child is at risk of 25% risk of having thalassemia major, तो व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे प्रेगनेंसी में उसका पेशेंट का अर्ली प्रेगनेंसी में? Termination of pregnancy? No. Stop करेंगे या? No. Just on the base. Chorionic villus sampling. Yes. Just on the base that she is. Testing. Yes. Just on the base that she is at 25% risk of having the fetus with thalassemia major, you will not go for termination. Rather, you will go for invasive testing. And that testing is either chorionic villus sampling in the first trimester or it is amniocentesis in the second trimester. So ultimately if the chorionic villus sampling shows that this is thalassemia major, then yes, you will offer termination of pregnancy in your patient. And if it indicates that it is thalassemia trait or minor, then just you will counsel that this child will be living a normal life. However, most oftenly they develop anemia, so you have to optimize the hemoglobin, but they are not at risk of repeated iron transfusions. So ultimately in every pregnancy you have to go for the invasive testing, and the reason is because you know that if mother and father both are carriers, then in every pregnancy there is 25% risk of a fetus having thalassemia major.
So to rule out this risk, you have to go for invasive testing in every pregnancy, and this testing is available in Pakistan, either in thalassemia centers. ठीक है. So ultimately you have to rule out the risk of developing the thalassemia major in the fetus. So is it clear to all of you now? Hello? My voice is clear to all of you? Okay. Now I discussed with you the this scenario regarding thalassemia, and what is the pattern of inheritance of thalassemia? Autosomal recessive? Yes, it is basically autosomal recessive inheritance pattern. So will it be having any difference in males or females? No, ma'am. No, because it is No sex difference. Yes, it's actually the pair of autosomes. So if autosomes are concerned, then it has nothing to do with either female or male. Irrespective of male or female fetus, the inheritance of pattern is same, like 25% disease, 25% normal, 50% carriers. So it does not depend that either it is male or female. ठीक है? So it was just I wanted to discuss with you about thalassemia. And also I have discussed that how to interpret this hemoglobin electrophoresis report. Like normally adult hemoglobin value is in the upper range, that is more than 95%, and those of fetal hemoglobin and the A2 value, these are very much negligible, 1 to 2% hardly. But in case of thalassemia, their value is increased. So definitely you have to consult the patient that we have to screen the husband by electrophoresis, and then in every pregnancy we have to see the fetus accordingly. ठीक है? So any question up till now? No, ma'am. Okay. बस थोड़ी सी I think few candidates had a confusion regarding intravenous iron therapy. So just I told you that some patients who are non-compliant, having oral thrush or gastritis or diarrhea or constipation with oral iron, then in that case you have to go for the intravenous iron. And in both cases the hemoglobin rise is seen after 3 weeks. And basically different preparations of intravenous iron are either you see that it is the dextran therapy, or it can be iron sucrose, or there can be carboxymaltose. And basically sucrose is available in the form of 100 milligrams ampule, and normally we give 2 ampules in 100 ml normal saline transfusing over 2 hours, or carboxymaltose comes as preparation of 500 milligrams ampule. So it's considered that generally the IV iron carboxymaltose has got least side effects, and the transfusion time is short in case of carboxymaltose, and multiple transfusions are also not required in case of carboxymaltose. And furthermore, the iron deficit is calculated by Genzoni formula. What is Genzoni formula? That is actually used for IV iron calculation. What do we do in this case? Actually, we have to calculate the dose of intravenous iron therapy, and that is calculated as the desired hemoglobin minus patient's own hemoglobin multiplied by a constant, that is 2.1, multiplied by patient's weight, that is either 60 kg or what else. And it is then later on added with stores. It is in non-pregnant state you add 500, and in pregnancy you add 1000, and according to this formula you actually calculate total dose of intravenous iron therapy, and you divide it on infusions, and the infusions are given on the alternate days, and along with it you also add folic acid, because any other deficiency of any vitamin, folate deficiency, that all may also be covered along with it. ठीक है? So this was a little bit about iron deficiency. And all of you know that how when a patient comes to you with anemia in pregnancy,
definitely the presenting complaint is shortness of breath. So you have to categorize this shortness of breath, that how much is this shortness of breath is disturbing her. Either she is not able to carry out the routine for life activities, or she is even having shortness of breath at rest. So this is categorized according to New York Heart Association classification, and you know this classification has got 4 different categories. कौन सी categories हैं? Can anyone tell me? Ma'am, grade 1 is like a normal routine activity she can do without limitation, and grade 2 is just mild. Mild, there will be shortness of breath, and grade 3 will be the moderate, and grade 4 very restricted, very restricted, cannot do without difficulty. In grade 4 there is shortness of breath even at rest. So you have to categorize this shortness of breath according to the severity and according to New York Heart Association classification, and also you have to ask about rest of the features associated with the complaint. You have to rule out any pulmonary or cardiac illness, and also you have to rule out that either how much compliant she is with oral iron, and any history of worm infestation, and what type of water she takes, either it is a proper filtered water or she takes any just tap water, and all the hygienic conditions, they should be assessed in detail when a patient comes to you. And later on, after taking the brief history, you have to do the examination by taking the pulse of the patient, and also you have to see the pallor in conjunctiva on the palm, on the nail bed, on the nails, and also you have to do the rest of the examination, and after that you have to go for the investigations. And I have discussed about the investigations of anemia with you already, and then further the management is depending upon the, if it is a severe anemia, definitely you have to give the blood transfusion, because in severe anemia the patient has so much depleted stores that her symptoms cannot be relieved if you give immediate blood, if you don't give immediate blood to the patient. So in severe anemia, definitely you have to transfuse the blood, and in mild to moderate categorization you have to decide either between oral or IV iron. And in case of mild, if she is compliant, again she can take oral, and if she is non-compliant, then you can better think of the intravenous iron. And your plan should be optimization of hemoglobin value at least 10 at term in the pregnant patient. And if she has high risk pregnancy like placenta previa or any other morbidity associated, then definitely you have to arrange and cross match the blood according to the situation of the patient, and be vigilant for the postpartum hemorrhage. So what is postpartum hemorrhage? If it is bleeding more than 500 ml in vaginal delivery or more than 1 liters in C-section, it is postpartum hemorrhage, and it's a risk in case of anemia. So definitely you have to, first you have to optimize the hemoglobin value, and second is you have to do the active management of third stage of labor, and then you have to be very much vigilant about signs signs of postpartum hemorrhage. Clear to all of you? Any question? Clear. Any question anyone wants to ask? ये गेंजोनी क्लासिफिकेशन किस बेस पे, मतलब ये मुझे थोड़ा सा क्लियर एक दफा कर दें तो मुझे समझ. Beta, Genzoni formula is for the intravenous iron therapy, and actually we have to calculate the dose of intravenous iron, and as from I have told you the formula, that it is desired hemoglobin we keep at 14. And for example, if the patient's hemoglobin is 9, so 14 minus 9 equals to 5. ठीक है, अब आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से, कांस्टेंट इसमें 2.1 होता है, आपने 2.1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो फॉर एग्जांपल रफली यू कैन से कि ये 5 को 10 ये आप करें तो ऑलमोस्ट 10 आ गया. ठीक है, तो अब आपने इस 10 को आपने मल्टीप्लाई करना है वेट से, तो कितना हो गया, ये ऑलमोस्ट 60 अगर है तो ये 120 हो गया. ठीक है, अब 120 एम आई राइट, इसमें आपने अगर इसको मल्टीप्लाई करें, ये था 14 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 को मल्टीप्लाई करें आप 60 से, कितना आएगा,
600 600 को आप में ऐड करें 500 तो कितना हो गया ये 1100 हो गया। ठीक है, अब ये 1100 का मतलब है अगर आपके पास टोटल अगर आपके पास 100 मिलीग्राम की इन्फ्यूज़न है तो कितने एमप्यूज़ चाहिए आपको 11 एमप्यूज़ चाहिए आपको, ऐसे है ना 11 एमप्यूज़ चाहिए। अब 11 तो हम नहीं मतलब वो कर सकते ना डिवाइड, हमने 2 के डालने हैं ना, हम यूँ कर लेते हैं कि यानी कि हमें 10 एमप्यूज़ फॉर एग्जांपल चाहिए। तो 10 एमप्यूज़ का मतलब है कि अगर आप 2 एमप्यूज़ डालते हैं 100 ml में तो कितनी इन्फ्यूजन्स बन गई आपकी ये 5 infusion। यस, ये आपकी 5 इन्फ्यूजन्स बन गई। और ये 5 इन्फ्यूजन्स आपने यानी कि 2 एमप्यूज़ लगाने हैं 100 ml नॉर्मल सलाइन में, तो ये आपने 5 इन्फ्यूजन्स ऑल्टरनेट डेज पे पेशेंट में एडजस्ट करनी है, उसको ट्रांसफ्यूज़ करनी है। इनिशियल हाफ एन आवर में आपने थोड़ा स्लो चलाना है ताकि कोई रिएक्शन ना हो, उसको देख लेना है आपने, और फिर आपने उसके बाद लेटर ऑन थोड़ा सा उसको स्पीड अप कर देना है। ठीक है, तो ये आपका प्रोटोकॉल होता है। क्लियर है? Yes ma'am, thank you। ओके, शुड वी एंड द क्लास नाउ? ओके, वी कैन एंड द क्लास नाउ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। Okay, yes ma'am। अल्लाह हाफिज़।